Again, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And this is Bakul Hanspal, the founder and the CEO of the BS Law Entrance Exam by your coach Bakul Hanspal. ये वीडियो होने वाली है पार्ट 2 ऑफ क्रिमिनल लॉ एडवांस सीरीज। पार्ट 1 देख लीजिए, अब एक्सप्लेन एवरीथिंग बहुत ब्यूटीफुली ही। ऐसा मत समझना बहुत ही लंबा कर दिया मैंने, बट इट इज लाइक आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, बिट बाय बिट, एवरीथिंग स्टोन बाय स्टोन। ये भी मैं एक पार्ट पढ़ा रही हूँ, स्टेजेस ऑफ क्राइम। चिंता मत करो, I'll keep it small only. You think I extend a lot many things. I do not do that. I have no intention of extending. ठीक है, I'll explain it बहुत जल्दी जल्दी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी नहीं, मतलब ठीक ठाक कर दूंगी। ठीक है, चिंता मत करो। स्टेजेस ऑफ क्राइम, क्राइम के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। हमने मर्डर के बारे में बात करी, हमने अटेम्प्ट टू मर्डर, सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड के बारे में बात करी। अटेम्प्ट इज सेपरेट, crime commission is separate. Let's see. We have four stages. One is intention. I'll take an example. Okay, I want to kill somebody. Fine. That is an intention. Preparation. Okay. I'm going to market in order to buy something which could facilitate this act. Attempt. I went ahead. I tried to stab him. Okay. And somehow he got stabbed, but he did not die. Or other case, le lo, I stabbed him and he just died. That is commission. अब इसको बेटर तरीके से समझते हैं। इंटेंशन, फर्स्ट स्टेज इज टू हैव क्रिमिनल इंटेंट। भाई उसको पीटना है, मारना है, दैट इज गोइंग टू बी द इंटेंशन दैट यू शुड हैव। Crime does not take notice of an intention. Mere intention to commit an offense not followed by an act cannot constitute an offense. Very, very, मतलब again, obvious. I want to kill somebody, but I have not taken an act. I have not, I would say, performed an act to kill that particular person. I have not moved up to that person to kill him. Of course, mere intention would not comprise a particular offense. The obvious reason for not prosecuting the accused at this stage, it's very difficult in order to understand, in order to discern that particular intention that that particular person possesses. Okay. Preparation. This is second stage. आप सारे स्टेप्स को अरेंज करते हो कि आपको क्राइम को कमिट करना है। जैसे होता है ना कि कोई टेररिस्ट एक्ट कहीं कमिट हो रहा हो, वहां पर आप क्या करते हो, आप ग्रेनेड्स लेने जाते हो, बॉम्ब्स वगैरह लेने जाते हो, है ना। तो तुम उस चीजों को देखोगे कि उस केसेस में क्या होता है, कहीं ना कहीं तो एक्सेप्शन लग ही जाते हैं। सो अंडरस्टैंड सच काइंड ऑफ एक्सेप्शंस। ठीक है, लेट्स सी। सो आप देखोगे कि प्रेपरेशन हो किसी पर्टिकुलर क्राइम का, अगर हर क्राइम का प्रेपरेशन, लेट्स सपोज समबडी हैज गॉन टू ओके परचेज अ नाइफ फॉर मर्डर, स्पेशल तरीके का नाइफ उसने खरीदा, पर्सन ने अब तक अटेम्प्ट नहीं करा, ना वो उसे मारने गया, ही इज जस्ट केप्ट इन हिज ड्रॉर। वो उसको ट्राई नहीं करा जाएगा, बंदे को क्यों नहीं करा जाएगा? क्योंकि प्रेपरेशन, मेयर प्रेपरेशन करना क्राइम को कंस्टिट्यूट हो गया, ये नहीं माना जा, है ना। अच्छा, मान लो एक बंदा टेररिस्ट एक्ट कमिट कर रहा है और उसके पास बॉम्ब्स और ग्रेनेड जो भी है वो उसने लाकर घर में रख दिया। हाँ, यहाँ पर बंदे को ट्राई कर दिया जाएगा, बिकॉज देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस। ठीक है, कि वो बंदा क्राइम को कमिट करने जा रहा था, तो अब वो हो सकता है आगे जाके क्राइम कमिट कर देगा, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज दैट, देयरफॉर प्रेपरेशन को भी ट्राई कर दिया जाएगा। Preparation is not unlawful in itself since it's very difficult to prove the essential steps. Come on, क्योंकि तुम देखोगे अगेन, तुम चाकू खरीद कर आए हो, तुमने ड्रॉर में रखा है, that could also be to cut vegetables, right? That could also be used to cut hard vegetables, right? You know, however, in some exceptional cases, it could be punished. Example, कलेक्टिंग आर्म्स, जो वॉर वेज कर रहे हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, दैट इज वन केस। काउंटरफीट ऑफ स्टोन्स एंड कॉइन्स, नकली नोट बना रहे हो, नकली कॉइन्स बना रहे हो, नकली स्टैम्प बना रहे हो, कॉस्ट देन आपके घर से मिले हैं भाई, फेक नोट, फेक स्टैम्प, सब कुछ, of course then. Making preparation to commit dacoity. Again, I have already explained the difference between dacoity and robbery. Check out my criminal law series, you will understand it better. Dacoity करने जा रहे हो, सारी चीजें तुम लोगों की, मास्क वगैरह, सामान, चाकू, छुरा, सब कुछ जो है तुमने बस रख लिया है एक साथ जमा करके, दैट टुमारो यू गोना गो। ओके, किसी ने पकड़ लिया ये सारी चीजें, तो आप प्रेपरेशन के तहत उस पर्टिकुलर मामले में, उस पर्टिकुलर क्राइम में, जिससे डिकॉइटी, ट्राई कर दिया जाओगे। अटेम्प्ट, अटेम्प्ट है पनिशेबल। ओके, criminal liability arises only when the crime has reached the stage which is gone beyond preparation and has entered into the domain of attempt. अटेम्प्ट के डिफाइन ही करके रखा हुआ, लेकिन पेनल्टी तो है। किसी बंदे के पास जाते हो, उसको चाकू मारते हो, ठीक है, अब उसको भी चाकू मार दिया, बंदा मरा नहीं, मर्डर हुआ नहीं, बट अटेम्प्ट हो गया जरूर, है ना। तो
चलो मान लो छोटा सा भी चाकू लगा, कोई स्टेज है कि आप पीछे मुड़ जाओ और आप बोलो कि अरे मैं तो चाकू वेजिटेबल्स काटने लाया था, इसको मारने नहीं लाया था, नहीं ना, तो कोई स्टेज बची ही नहीं। कमीशन ऑफ क्राइम, अब क्राइम कमिट करने फाइनल स्टेज है, किसी बंदे ने मान लो क्राइम को कमिट कर लिया अगेन, वो बंदा गिल्टी माना जाएगा, उसको पनिश कर दिया जाएगा। फाइन, आगे चलते हैं। अब आईपीसी में हमने बहुत सारी चीजें देख ली, मर्डर, थेफ्ट वगैरह, असॉल्ट वगैरह। अब थेफ्ट को हम देखते हैं एज अ डेफिनेशन कैसे चलता है आईपीसी का। whoever dishonestly intends to take any movable property, remember you are not taking immovable property into account, you're just taking movable property out of possession of some person without that person's consent and with that intention moves that object in order to commit such a taking is said to commit theft. Fine. Ritu, इसका literal sense में जाओ, ठीक है, Ritu is there, Ritu's book is lying on the table, ठीक है, and Ritu is looking outside the window. Ritu is basically talking someone on with someone on phone, and she's looking out of the window. Okay, Meenu comes. Meenu sees her book. Oh, this is a very new edition of this particular novel that I've always wanted to read. She goes, she touches this particular book. She moves it 5 centimeters towards herself. Okay, what happens again immediately? Ritu, she moves back and she sees Meenu, and Meenu pulls her hand away from this particular book as if nothing actually had happened. Did Meenu commit theft? Okay, if you see it that way, yes, she committed theft. She had that dishonest intention. She moved that movable property, which was book. Okay, but was it out of the possession or was it in the possession of Meenu or of Ritu? No, it was not at all in the possession of Ritu. Okay, did she take Ritu's consent? No. She moved that property? Yes. To such undertaking, meaning to take it away. Did she commit theft? No, she did not commit theft. Why is it so? Because it was not in the possession of that particular person. ओके वो मान लो वो इधर खड़ी है, टेबल उसका साइड में टेबल थोड़ा मान लो 6-5-6 सेंटीमीटर पीछे पड़ा है, वो बस देख रही है, दैट इज नॉट हर टेबल, दैट इज द स्कूल्स टेबल। मान लो वो उसका टेबल होता, 1% मान लो वो उसका टेबल होता है, बस 1% मान लो, तो वो टेबल लाती है, वो स्कूल में वो टेबल रखती है, वो उसको खोलती है, नीचे बैठने वाला जो टेबल है, फ्लोर पे बैठने वाला, वो अगर मान लो वैसा वाला काम करती, दैट इज इन हर पोजेशन एंड दैट वुड हैव बीन कंसिडर्ड एज अ थेफ्ट। However, it is not theft in this particular case because the table does not belong to her, because the table does not come under the possession of Ritu. Have you understood this particular thing? This is a thing which usually is not clicked by students. So I think I've explained this in a very beautiful manner. Possession is a thing which was, I would say, the game changer in this particular example. The moment the table changed or the possession of table changed, everything changed, right? So, okay, there is one more thing that comes into play, that is possession and ownership. Okay, okay, fine. अगर ये मान लो इस particular चीज में Ritu, she was using that particular table. Ritu was sitting on that particular table. Ritu had her hands on the table. Let's suppose now Ritu was using her phone, talking to someone and looking out of the window, and Meenu comes then. Meenu tries to again take that book away from her 5 centimeters. She moved that book towards her. Will that be considered as theft? Yes, that would be considered as a theft in literal sense. However, it is not at all theft. So, again, that is something which you would not try Meenu, right? That would be attempt to theft, but that would not be considered as theft. However, यहाँ पर जो चीज रखी हुई है ना, moves in a certain manner, she just moves it away. Moves the literal sense में move करना होता है ना, so that would be something which would be considered in literal sense. But अगर वैसे कोर्ट में जाकर सू करने लगोगे, then that is waste of your time as well as your energy and resources as well. So possession is one thing, ownership is something कि वो मैंने जो अभी भी एग्जांपल दिया ना, वो फोन पे बात कर रही है, उसके हाथ टेबल पर है, she is possessing that particular table right now, but she does not own that particular table. So understand the difference between possession and ownership. That is also the thing. Ownership, you own it. It does not necessarily mean that you possess it or not at that particular moment when the crime committed. However, when you are possessing that particular thing, it does not mean that you are owning it simultaneously. You can also choose not to own that particular thing. Fine, ownership is when you have purchased it. Possession is you have not purchased it, but still you are using it, or still you have it with yourself. That is possession. So you see, possession changed the game in few scenarios, but if you go by literal definition, it literally means to move. Or move wale case mein, you understand the thing, but you
generally do not go to court for such small things. मतलब this is a very, I would say, बहुत अजीब example जो मैंने दिया. I would not call it अजीब, but I would call it a very literal example that I have given to you. In other words, theft होता है कोई किसी की और property ले ले किसी दूसरे consent से. Mere intending to take someone else's property without actually going ahead with the act does not amount to theft, like in this particular example. ठीक है, a kind of an attempt. It was not theft exactly. क्योंकि अभी बुक थी ही उसके पास 5 सेंटीमीटर भी चली गई, लेकिन बट शी ट्राइड टू मूव विद दैट पर्टिकुलर इंटेंशन ऑफ स्टीलिंग इट. पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट इज स्टिपुलेटेड इन सेक्शन. फाइन 3 साल की हो सकती है. डिफरेंट क्राइम्स की डिफरेंट सिवियरिटी है. चलो भाई, कुछ ऐसे स्पेशल क्राइम्स हैं जिनके अलग अलग पनिशमेंट मेंशन्ड है. लुक एट दीज पर्टिकुलर क्राइम्स, अदरवाइज नॉट एट ऑल रेलेवेंट. Okay, CRPC is something which is procedural. I know you have understood the difference between substantive and procedural. If not, check out the very first video of criminal law. I have put that in I button, not the advanced series, but the basic series. You'll understand it better. कुछ के चंद मिनटों में ही मैं I have explained that particular thing. Types of crimes covered. So देखो, अब this is something, this is the very basic thing which is mentioned. अब यहाँ पर ना ये भी I have very beautifully reiterated in my criminal law videos. Golden threadbare principle. Thread principle of criminal law. What does it mean exactly? I've also explained most accused persons do not lead the defense evidence in India. This also I have particularly explained. Okay, then burden of proof is there on the prosecution to prove the offense, and the degree of proof is required in criminal law, proof beyond reasonable doubt. I've explained this particular thing as well. Okay, फिर क्या लिखा है? Presumption of accused innocence is a long-standing principle. I've explained this also thing. Accused ignorance, sorry, innocence or raise a reasonable doubt to his guilt. ये भी मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है. कब बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट हो जाता है प्रोसिक्यूशन से अक्यूज में, इज अ फंडामेंटल ट्रूथ दैट जस्टिफाइज द शिफ्ट इन बर्डन. इसको भी मैंने एक्सप्लेन करके रखा हुआ है. द गोल्डन रूल आल्सो हैव एक्सप्लेन. डाउरी डेथ आई हैव आल्सो एक्सप्लेन. चेक आउट दैट पर्टिकुलर वीडियो दैट आई हैव अटैच्ड ऑन द आई बटन. मैं बेसिकली उसमें स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल को एक्सप्लेन कर रही हूँ. वहां पर कुछ 3 चुनिंदा लाइनें थी जहां पर मैंने पूरी चीजें तुम्हें बताई थी और डाउरी डेथ का भी एग्जाम्पल दिया था. ठीक है, एंड यू विल अंडरस्टैंड बेटर. जस्ट चेक आउट दैट पर्टिकुलर वीडियो. वो तुम्हारे डाउट्स बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे. क्रिमिनल लॉ वाला ट्रायल समझ में आ जाएगा. साथ साथ ये वाली चीजें भी यू विल अंडरस्टैंड इट. सो द गोल्डन थ्रेड प्रिंसिपल हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड देयर. ठीक है, just watch that particular video and everything would be sorted. If not, I'll be more than happy to prepare a separate video based on golden thread principle of criminal law. I'll do it again, no worries, but just check that particular video out. Okay, Indian Evidence Act, which is BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम. ठीक है, पहले था भारतीय साक्ष्य संहिता, बट बीएसएस से इट हैज बीन चेंज्ड टू बीएसए. इट बेसिकली डील्स विद एविडेंस. ठीक है, तो एविडेंस एक्ट helps the judges to separate wheat from the chaff, right? You are just separating things out. Why? Because you're picking up the relevant evidence which is germane to that particular case. Main principles जो होते हैं उसके evidence must be confined to the matter at hand. मतलब it should be germane, it should be pertinent, it should be, I would say, just cover which were like the at least the matter which is there in your hand. Here's evidence, मतलब सुनी सुनाई बातें, rumor वगैरह कुछ allowed नहीं है. Best evidence देना चाहिए something which is very solid, something which is very understandable, something which is not so confusing, जो फालतू conundrum पैदा नहीं कर रहा है. Act, अब ये particular act ना 3 भागों में divided है. अब okay, reading this particular thing, we read it for CLAT. I won't deny it. We read it for CLAT. We went through the Bare Act also for a CLAT preparation. Whether you want to go through it or not is something that you will tell me in the comment section, because this is not relevant. To be very honest, Evidence Act, going through the Bare Act is not at all relevant. But if you want that, we can go through only some relevant sections. क्योंकि जब आप उसको खुद पढ़ने बैठोगे ना, खुद पढ़ने बैठोगे तो घूम जाओगे. Which is very difficult. To be very honest, we also found it very difficult. But when we just read it again, so we understood it better. So if you want that, we can do it. We can take a session where we'll do the Bare Act of Criminal Law and we'll understand it better. Fine. I will just mota thing you understand for a class 12 legal studies. If you're preparing CLAT वाले, just skim through it. Because कोई criminal law का passage आया ना, mocks में you get a confidence first. You will get a confidence. Okay, fine. Okay, I'm performing good in mocks. I'll perform good in CLAT also. Again, I said also, this is not a guaranteed thing that comes into picture. Right? Of course, मतलब बहुत सारी चीजें depend करती है, but this is not guaranteed completely. It could be, it could not be. Okay? Again, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ उस पर, but both ways things can be there. However, again, अगर मॉक्स में नहीं आते नंबर, हो सकता है क्लैट में भी अच्छा आ जाए. It's a very altogether a very different story.
मोस्ट आस्क्ड एफएक्यूज वाली सीरीज आई हैव ऑलरेडी पुट ऑन माय यूट्यूब चैनल, उसको जाकर एक बार देख लेना। वो भी चीज मैंने दो, आई थिंक दो सेशंस लिए अब तक, देख लेना, 10-10 मिनट के हैं। फिर देखिए 2x पे देख लेना, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। रेलेवेंस ऑफ एक्ट्स, फैक्ट्स और फैक्ट्स। तो पहले पहले यू आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट व्हाट इज फैक्ट्स, फैक्ट्स का रेलेवेंस। रेलेवेंस ऑफ फैक्ट्स, हाउ कैन दे बी प्रूव्ड? ओरल एविडेंस अलाउड है, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस अलाउड है, कौन प्रूव एविडेंस देगा, किस हालत में एविडेंस दिया जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आते हैं एक एडमिशन और कन्फेशन में फर्क क्या है, वन ऑफ द हॉट। एडमिशन और कन्फेशन में फर्क क्या है आज समझते हैं। सेक्शन 17 और 31 में क्या चीजें मेंशन है, आपकी एडमिशन और कन्फेशन के बारे में चीजें मेंशन है। जो 24-30 में कन्फेशन मेंशन है, एडमिशन इज मेंशन अंडर 17-31। ठीक है। एविडेंस एक्ट में आप ओरल भी दे सकते हो, डॉक्यूमेंट भी दे सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी दे सकते हो, कंप्लीटली इट्स अप टू यू। कन्फेशन ओके 24 में मेंशन्ड है ना। और अगेन this is something that you can skip because it's a very, I would say, theoretical part. Major thing that arises is the difference, क्योंकि ये तो पढ़ के मैं बस आपको बता दूंगी ये क्या बोल रहे थे, चलो we'll do it. Confession is an admission which is made at any time by a person charged with a crime, stating or suggesting the inference that he has committed a crime. Let's understand it. Confession यहाँ पर एक species of admission है. You draw a Venn diagram which is of admission. Admission may comprise of a number of things. Confession would be just one part of admission. मतलब admission एक बड़ा सर्कल है, confession एक छोटा सा species है उसके अंदर. This man is trying to say the same thing. कन्फेशन एक एडमिशन है जो कभी भी हो सकता है क्राइम के रिलेशन में। कैसे क्राइम्स? सिविल क्रिमिनल मैटर्स। कैसे मैटर्स? लेट्स सी। 24-30 में कन्फेशन से डीलिंग हुई है, 17-31 में एडमिशन से डीलिंग हुई है। ठीक है। और अब देखो आप कि एडमिशन हम कॉम्प्रिहेंसिव है क्योंकि वो कन्फेशन को भी कंप्राइज करता है। अब एक पर्टिकुलर क्रिमिनल मामला है, क्रिमिनल मामला में कोई बंदा बयान दे रहा है अपना, दैट इज गोइंग टू बी कन्फेशन। सिविल मामला में कोई बंदा स्टेटमेंट दे रहा है, दैट इज गोइंग टू बी एडमिशन। रिमेंबर दिस थिंग, इट्स अ वेरी क्लियर कट थिंग। Expression confession means a statement which is made by an accused admitting his guilt. Confession is a statement which is made by an accused which sought to be proved against him in the criminal proceeding to establish it. Expression admission means voluntary acknowledgement of truth or fact. देखो confession is something, आप क्या बोल रहे हो, यू आर सेइंग कि मैंने वो क्राइम को मैं एडमिट करता हूँ कि हाँ मैंने वो क्राइम कमिट करा है, दैट इज द कन्फेशन दैट यू आर गिविंग, दैट कुड बी यूज्ड अगेंस्ट एज वेल, अगेंस्ट यू एज वेल। हमने बात करी थी ना ऑथर ऑफ एक्विट, ऑथर ऑफ एक्विट एंड कन्विक्ट की इन द वेरी लास्ट वीडियो ऑफ क्रिमिनल लॉ बेसिक्स। चेक दैट पर्टिकुलर वीडियो आउट। हमने बोला था राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन होता है, कोई पर्टिकुलर चीज मेरे लिए इंक्रिमिनेटिंग है तो मेरे को जबरदस्ती मेरे साथ नहीं हो सकती कि मैं उस चीज को मेरे मुंह से वो चीज उगली जाए कि मैंने वो क्राइम कमिट करा। यू कैन नॉट डू दैट। अगर आपने एक बार कन्फेस कर दिया, नॉट टू द पुलिस बट टू द कोर्ट, इफ यू आर टेलिंग दैट पर्टिकुलर थिंग क्योंकि आई हैव कमिटेड दैट क्राइम, आई एक्सेप्टेड दिस माय कन्फेशन, this would be taken into consideration, that this would be used against you. This is confession, altogether a very separate thing. Okay, and this would be proved also along with relevant evidences that you provide, which the prosecution gives, and which you, of course, you do not provide, but which the prosecution gives eventually, which is sought to be proved. Fine. And admission is civil matter mein, okay, I just acknowledge that I was the person who basically trespassed into her fields. This is admission, you are admitting it. इसको कन्फेशन भी बोल सकते हो, बट कन्फेशन क्रिमिनल मैटर में बोलते हो। कन्फेशन फ्री और वॉलेंटरी हो सकता है, और ये कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ मैटर, कंक्लूसिव प्रूफ है एविडेंस का। देखो तुम बोलते हो ना आई हैव कमिटेड दिस पर्टिकुलर क्राइम, ओके फाइन, आई हैव कमिटेड दिस पर्टिकुलर क्राइम, दैट वुड बी टेकन, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ट्रू। बट एडमिशन में बोलोगे ना कि आई ट्रेसपास इनटू हर फील्ड्स, यू नीड एविडेंस, नीड्स टू बी बैक्ड विद दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट दैट यू हैव मेड। क्यों? क्योंकि एडमिशन कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ matter which is there, conclusive proof of evidence. Confession always goes against an individual. Admission उस बंदे के behalf पर भी हो सकता है, admission could be against also, admission could be any way around, but confession would always be against that particular individual. Confession and admission remain the same. Major thing or the major difference of matter that arises is whether it's a criminal matter or a civil matter. Confessions would always go with this criminal matter. Admissions would always go with a civil matter. Therefore, we say confession C, criminal C. However, don't confuse it with admissions and civil, or maybe confessions or civil. But the virtue of the provision in section 30, confession of an accused is relevant against all the co-accused. But ऐसा नहीं होता admission में. Example,
दो बंदे, 5-6 बंदे डिकॉइटी कमिट करने आए, ठीक है, एक बंदे ने डिकॉइटी कमिट करी और मान लो चारों पांचों भाग गए, बाद में पुलिस उसे ढूंढ कर लाई चारों पांचों बंदों को। अब जो बंदा ऑलरेडी पुलिस पुलिस की गिरफ्त में था और कोर्ट में था, उसने बोल दिया हाँ मैंने डिकॉइटी कमिट करी थी, और मेरे साथ 4-5 बंदे और भी थे जिन्होंने डिकॉइटी कमिट करी थी। दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट दैट वाज मेड बाय राहुल इन दिस पर्टिकुलर मैटर, दैट यस these 4-5 people were also involved in the matter of dacoity, would be considered as a relevant piece of evidence or relevant piece of proof that these people have also committed that particular crime, क्योंकि अक्यूज अगर वो चीज बोल रहा है और वो को अक्यूज पर भी मानी जाएगी, that would be considered. बट अगर ये चीज इट वुड नॉट वर्क इन द केस ऑफ admission कि yes I trespassed this his particular field, but Sohan or Mohan also helped me to trespass her land. No, you need to give relevant evidence. ठीक है, you those people would not be implicated just because you have made an admission. Fine, it was in a case of civil matter. So I hope that you found this section very interesting. Forms of confession, we look at it in the very next video. So for now, do a like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. और करते रहो subscribe क्योंकि मेरे को I get a lot of motivation from you all because you are subscribing as I've been observing, and start commenting also, right? And जो भी मेरे को comments आते हैं उससे मेरे को मिलता ही motivation. So for now, do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel. Stay tuned.